Hello world, this is Shruti Pandey, and today on itishruti I have with me another wonderful guest and founder, Ankur Jhaveri, the founder of Jackfruit. In case most of you don't know, there was one post that he wrote which went very, very viral. Not that he's not a very famous person on LinkedIn, but we'll get to know a little more about his journey today. And thank you so much, Ankur, for saying yes to be on this podcast of mine. And now that I have had this happy realization that we are batchmates, I think I'm going to treat you like a friend and a batchmate and talk to you like that. So हिंदी इंग्लिश जैसे भी तुम्हें ठीक लगता है वी कैन टॉक इन दैट लैंग्वेज एंड इट्स दिस इज ऑल अबाउट यू एंड योर स्टोरी एंड सेलिब्रेटिंग अंकुर जवेरी. No, thanks a lot for having me. Yeah. Like I said, it's good to be here. I mean, it will be a good experience for me, I'm sure, and I just hope I can kind of talk about entrepreneurship to people who want to jump in there. So yeah, it's great to be here. Yeah. फाउंडर वाले कीड़े तुम्हारे अंदर तब से थे अगर मैं मुंबईया भाषा में बोलूं तो. Yeah. So I am from a Sindhi family. मतलब business runs in the blood. तो पहले से ही था, मतलब हमेशा से यही था कि खुद का ही कुछ करना है इवेंचुअली. बट तभी व्हेन आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग तब तो छोटे थे, एंड तब हमारे टाइम पे लिंक्डइन ट्विटर इतना था नहीं टू काइंड ऑफ फिगर आउट व्हाट वी वांट. बस वही था कि यार 3 लाख का जॉब ले लो या 3.5 लाख का जॉब लो. दैट वाज द ओनली क्वेश्चन दैट वी हैड. एंड आई वाज अ हॉरिबल स्टूडेंट. मतलब मुझे तो इतने like I was not even eligible to sit for most of these bigger companies, TCS, Accenture and all of those. मेरा वो aggregate नहीं था. So I started my career with a smaller company, and I was fortunate कि I started it there. मतलब I was working on the business side in an IT company only. That was one company which came with a non-tech role, और उसी company ने बैठने. And what experiences did you gain from working at this IT company but in the business side? क्या क्या समझ आया तुम्हें वहां? A lot. Okay. A lot actually, क्योंकि later I went for my post graduation. जब MBA कर रहा था तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि यार मेरे बैचमेट्स को तो काफी चीजें नहीं पता है, बिकॉज MBA में भी यार 70% तो इंजीनियर्स ही होते हैं. So a lot of the things that were taught in MBA, मतलब काफी, at least on the marketing and sales front, काफी सारी चीजें मेरे को पता थी because I had come from a business background. But a lot of people from the engineering background did not know about it. So it really helped, me gain a perspective on how businesses function. And eventually, जब MBA किया तब then it proved to be advantageous. So it was a smaller company, so एक advantage ये भी था कि काफी कुछ किया वहाँ पे. Like my role was not restricted to one function. So it turned out to be good actually. उस टाइम पे आई थिंक 2011 में हम छोटी कंपनी को छोटी बोलते थे, बट अगर इस टाइम पे उस सेम कंपनी का नाम ले वी विल बी कॉलिंग इट एज अ स्टार्टअप, राइट? बिकॉज वहां पे सब कुछ करने का अपॉर्चुनिटी मिला मुझे एंड आई वाज डूइंग एवरीथिंग. सो आयरॉनिक, राइट? आई मीन द वे यू सी थिंग्स बैक देन. 10 साल में कितना चेंज हुआ है ना यार अपने पूरे डेकेड में. Now, if Richard is talking about the same thing, he would say, I was working at a small startup and I got the chance to do everything. But look at you the way you are saying कि हाँ यार छोटी कंपनी थी पर बहुत कुछ सीखा मैंने. So TSEC हो गया, MBA पे आ गए, बीच के तुम्हारे जॉब्स की भी स्टोरी सुन ली. फाउंडर तुम हमेशा से ही खून में था, कमिंग फ्रॉम अ सिंधी बैकग्राउंड. सो व्हेन डिड यू एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग इनटू द फाउंडर थिंग? आई इवन सॉ a company by the name Girgit, and I'm pretty sure ये वो गिरगिट नहीं है जो अभी शार्क टैंक में आके गया था, because नहीं वो नहीं है. another Girgit, right? So you have been in a lot many companies, and क्या क्या तुम्हारा फिर वो जर्नी रहा कि एक कंपनी फाउंड की, उसमें काम किया, फिर उसको खत्म किया, फिर दूसरे पे गए, ये क्या तुमने रिले रेस शुरू की बाद में? नहीं, so it was मतलब हमेशा से कुछ करना ही था. तो इनफैक्ट MBA also I did it because primarily मेरे को खुद का बिजनेस करना था. So I picked up a course which was more focused on entrepreneurship. तो मेरा MBA is not like a routine marketing finance MBA. It's in business design. So design thinking oriented course है.
So I specifically chose that because eventually मेरे को business ही करना था. So MBA में ही मतलब entrepreneurship cell था. We were obviously I was very active there. एंड वहां पे एक आइडिया आया था. सो वी वर आई वाज एक्चुअली एक आईपीएल मैच में गया था. एंड उसके लिए जर्सी लेनी थी. अब कॉलेज टाइम पे तो यार इतने पैसे होते नहीं है. एंड आई एम लाइक यार 600 रुपए की जर्सी एक दिन पहनना है मेरे को. मतलब इट्स नॉट लाइक आई एम गोना गो फॉर आईपीएल मैचेस एवरी सीजन और एवरी ईयर और व्हाटएवर. तो दैट्स वेयर इट स्ट्रक मी कि यार इतना एक्सपेंसिव जर्सी मैं क्यों खरीदूं. So that's where the idea came कि why not come up with say a fabric skin, a fabric sticker for your t-shirt. So Girgit was it's nothing but a fabric sticker. You just apply it on your plain t-shirt पे कोई event के लिए. जैसे event हो जाता है you just remove it and throw it away. तो 50-60 रुपीज में आपका काम हो रहा है जब आपको 500-600 रुपए otherwise लगेंगे. So that's what we started and बहुत मजा आया वो करने को. We were campus में ही थे. मतलब we were doing it while we were in college. But we got a lot of publicity somehow. We were that was like the first वो limelight में आते हैं ना, वो first था हमारे लिए. So me and my partner, so we were covered on CNBC. वो एक Young Turks का उनका show है. We were covered there. Then this महाराष्ट्र का एक leading newspaper है लोक सत्ता. It's the I think number 1 or number 2 circulation में. They did a story on us. Some guy called me from आंध्र प्रदेश saying कि हम आपका पेपर में मेरे को एड देखा था, मैंने कुछ आर्टिकल देखा था आपके बारे में, तो आई वांट टू बाय इट. तो एंड हमको तो पता ही नहीं था. सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. सो बेसिकली तुमने इसको शट किया एंड फिर अपने दूसरे जॉब पे गए जहाँ पे तुम्हें ऑफर मिल रहे थे. तो वो वाला फिर कैसा रहा? अचानक से इतनी सारी जो सेलिब्रिटी और लाइमलाइट मिली थी एंड देन शटिंग इट ऑफ एंड मूविंग ऑन टू बीइंग अ रेगुलर एम्प्लॉय. व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? अच्छा ही था. मतलब वो लाइमलाइट के लिए तो किया नहीं था हमने, वो तो मिल गया था फॉर्चुनेटली. सो सो आई वर्क विद एक्सिस बैंक फॉर अ व्हाइल. बट वही था मतलब खुद का स्टार्टअप करके फिर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ओरिएंटेड बैंक में काम करना. मतलब आई थॉट यार मुझसे नहीं होगा ये. तो देन आई स्विच टू फिनटेक. मतलब वहां पे आई वाज देयर फॉर अ फ्यू मंथ्स. आई थिंक 7 मंथ्स के लिए था. बट आई रियलाइज यार मतलब अब तो नहीं होगा एट दिस पॉइंट. मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज मैं नहीं कर सकता. एंड देन एक फिनटेक में ओपनिंग थी. मेरा फ्रेंड था वहाँ पे. ही वाज सेइंग दैट दे आर लुकिंग एट हायरिंग, सो व्हाई डोंट यू कम. आई थॉट ठीक है चल लेते हैं. एंड वहाँ पे मिल गया. गेटिंग इनटू फिनटेक वाज जस्ट अ मतलब आई डोंट नो, आई जस्ट कॉल इट लक. मैं आई वाज नॉट इवन एक्टिवली लुकिंग. बट वहां पे मिल गया. एंड उसके बाद इट्स आई मीन आई हैव फॉलन इन लव विद फिनटेक. सो उसके बाद इट्स ऑलवेज बीन वहां पे था 3 साल. एंड देन आई वर्क विद अनदर फिनटेक कंपनी फॉर अ ईयर एंड अ हाफ. एंड देन फिर खुद का स्टार्ट किया था जैकफ्रूट. दैट वी वर्क फॉर अ ईयर एंड अ हाफ. सो मतलब coincidentally I got into an industry which I started loving. So that was good. So don't you think fintech and bank is like a very thin line between the two? Because अगर बैंक के भी तुम आईटी साइड में होगे तो इट इज एक्चुअली अ फिनटेक, राइट? बट तुम्हें अचानक से वो पूरा स्ट्रक्चर ऑफ अ बैंक नहीं हजम हो रहा था क्या आफ्टर कमिंग फ्रॉम योर स्टार्टअप नहीं एक्टिविटी? यार मतलब नहीं. सो प्रोसेसेस बहुत होते हैं. मतलब बैंक इज अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन राइट. तो वो एक चेंज करने को इट टेक्स अ मंथ और 2. अब मैं फिनटेक में रहूंगा तो 2 महीने में तो 4 पायलट्स खत्म हो जाएंगे. बिकॉज इट्स अ स्मॉलर सेटअप, इट्स अ स्टार्टअप राइट. So speed of execution is fast when you go to and when I say fintech I'm talking about a startup. अब there are larger fintechs also जो 6-7 साल पहले स्टार्ट हो चुकी है. Probably वहाँ इतना फास्ट नहीं होगा. बट मतलब that's what I'm saying. बैंक में 2 महीना लगता था एक चेंज करने को, और यहाँ पे 2 महीने में तो हम 3 पायलट्स खत्म कर सकते थे. So that was what was exciting for me. तो अचानक से फिर इन द मिडल ऑफ पैंडेमिक जैकफ्रूट का कहाँ से आइडिया आया? आई मीन द नेम इज ऑल्सो वेरी फैंसी फर्स्ट ऑफ ऑल. इतना मस्त नामकरण भी कैसे हुआ? एंड हाउ डिड दिस आइडिया कम इनटू पिक्चर गिवन द फैक्ट देयर इज इफ इफ इट इज सेफ टू से कि काफी कंपटीशन आ गया इस लाइन में भी, इन द सेंस कि हर किसी को चाहिए कि फिनटेक का एजुकेशन हो इंडिया में. नॉट जस्ट फिनटेक, अबाउट फाइनेंस, चाहे वो बच्चे लोगों को सिखाना है, चाहे वो बड़ों को सिखाना है, चाहे वो अपने लोगों को सिखाना है. सो ये कहाँ से अचानक हमारे दिमाग में जैकफ्रूट आया?
So actually, Jackfruit ka idea came in 2020 only. I was working when I was working with my other with another startup. वहाँ पे we were doing a lot of research. So I was heading the neo banking team there. वहाँ पे भी हम neo banking का platform बना रहे थे. But while kind of doing research there, while talking to people, I realized कि यार हम तो वहाँ पे financial inclusion कर रहे थे. So working for rural India and tier 4, tier 5, जिनकी salary is like 10-20,000 rupees. But then I realized कि यार even in the white collar segment, मतलब corporate employees, uh, personal finance का awareness बहुत low है. And when I started digging deeper, I realized कि यार mutual funds भी कैसे काम करते हैं लोगों को पता नहीं. And this was all pre-pandemic. So I was like यार मतलब anyway wanted to start my own business. Finance is something I have always been passionate about, personal finance. मतलब हमेशा से दोस्तों को भी friends पूछते थे क्या करना है क्या नहीं करना है. I used to study myself and something I really enjoyed doing. And I realized that ये एक बड़ा problem है. So I thought, why not solve this? I have a problem that I want to solve. I am, passionate about it. I enjoy doing it. Timing भी अच्छा है. Like I don't have any responsibilities. I'm not married, this and that. So I thought, yeah, it's I think the right time to get into it right now. So तब इसलिए start कर लिया. Uh, but by the time we started, we got the product in place and everything. We realized कि यार वो कोविड का जो पीरियड था ना 2020 एंड 2021, तब एकदम स्टीप लर्निंग कर्व था फॉर फाइनेंस. सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब 2020 के बाद आया है. सही बोल रहे 2020 2021 के टाइम पे. हो. एंड हमारा काम मतलब मेरा पर्सनली काम तो उसके पहले से स्टार्ट हो गया था. बट 21 आई स्टार्टेड, आई फॉर्मली स्टेप डाउन एंड स्टार्टेड जैकफ्रूट. बट बाय द टाइम वी लॉन्च, लाइक आई सेड, वो 2 साल में इतना एक्सपोनेंशियल लर्निंग हो गया था कि what we were trying to do with an app, people had already done on Instagram and YouTube and everywhere. So that's where we kind of, got the timing wrong. No, I mean, you reminded me of exactly the same thing जो हम लोग recording के पहले भी बात कर रहे थे, right? It's all about the timing. And even if I look in general, जिस तरीके से pandemic का बहुत लोगों ने को बहुत problems आई हैं, but there have been amazing people who utilize that time very well. So it could have been कि बस चालू कर लिया YouTube पे अपना कुछ knowledge दे दिया. It could be anything. It could be बच्चे लोगों को स्कूल का पढ़ाई कराने से लेके फाइनेंस तक. It could be anything, right? And I think that was a very sweet spot from 2020 to 2021. और जिसने उस टाइम पे क्रैक कर लिया ना, उनका बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया है. I can see Yeah. clearly. You said it yourself. So कब तुम्हें ऐसा लगा कि यार अब जैकफ्रूट को बंद करना चाहिए? Because at the beginning, like we were talking about that viral post of yours, and it's very commendable of you to have been, very honest and very outspoken about जो भी तुम चीजें कर रहे थे throughout your jackfruit journey on LinkedIn. हर चीज तुमने शेयर की है कि अब हम पिवट कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, अब हम क्लोज कर रहे हैं. And it takes a lot of strength to do that. And I mean, if you remember, US में जब last year ऐसे सारे posts आ रहे थे about founders either crying or talking about shutting off their companies, many of them were even getting bashing and trolling. तुम्हें डर नहीं लगा जब तुम ऐसा कुछ डालोगे, कुछ यहाँ पे भी ऐसे आ जाए which would just backfire? नहीं, honestly, so मैंने तो वही किया था. Since we started, we were doing everything in public. हमने जब बीटा रिलीज किया तब हमने डाल दिया था कि यार our beta is out. जब हमने पिवट किया तब मैंने डाल दिया था कि यार हमने पिवट कर दिया है. Even during the journey, I used to constantly keep writing कि how difficult it is to build a business. It's not easy. वो बहुत glamorous दिखता है बाहर से, and people say कि हाँ tough है, but actually बहुत tough है. So मतलब I was always putting it out there कि जो भी है situation वो है. मतलब people should not. I don't want to discourage anybody from starting their own business, but I wouldn't want to tell people that it's easy to do. Yeah. It's not. And especially if you don't have that network, if you don't have funds, bootstrap कर रहे हो, तो it is all the more difficult. So, since we were building in public, we were, everything was online. हमारे सारे updates मतलब मैं LinkedIn पे डालता रहता था. I thought यार, if you're shutting down,
If the community has been so helpful, we have had about 38,000 followers on LinkedIn, about 9,000 subscribers to our newsletter. So I thought, यार इतना तो बनता है कि just tell people that we are not going to be operational now. And that was the idea. I put it out, and honestly, I wasn't, I was pleasantly surprised to see the kind of reaction that, people started pouring in. So, उसके एक हफ्ते बाद ये शार्क टैंक का एपिसोड हुआ था, वो गणेश बालकृष्णन का. Oh. And I mean, I saw like a smaller version of that happen with my post. When I put out there, I mean, within half an hour of posting, I had like 10 messages on WhatsApp from known people saying, "Ki Ankur, we just read about this and let me know if I can be of any help." Series B, C funded startups के founders started reaching out saying, "Ki let me know if we could help you in some way." One company reached out saying, "Ankur, what do you need to stay alive? Let me see if we can figure something out." So people reached out to offer jobs and this and that. So it was very unexpected, but it was very good to see that failure is not looked down upon. At least not in this community that we are there. Startups बोल लो या जो LinkedIn की community है. At least there nobody is looking down on failure. So I mean, it was a good thing that I posted that. I didn't have a doubt that I will do it, but थोड़ा लगता था कि I don't know how it's going to be perceived. But I mean, that post just went viral. It got some 1.5 million views and all, and so many people reached out saying, "Yeah, let us know how we can be of help." So yeah, it was good to see that failure is not something that people are looking down on. So I hope जितना तुम्हें support online मिला या LinkedIn पे मिला, that was also being reflected in the real life, right? People reaching out and genuinely something's happening. But I want to understand two very important things from you. एक तो when did you finally realize कि हाँ यार अब बंद करना पड़ेगा? And अब तुमको क्या लग रहा है? What next? I mean, I don't mind if you say Shruti अभी मैं break ले रहा हूँ, which is also fair enough. But yeah, I genuinely want to understand these two things. एक तुम्हें कब लगा कि यार अब नहीं इसको कर सकते और and what next for Ankur? So हमने एक्चुअली ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए. तो पहले तो बाय मार्च लास्ट ईयर वी रियलाइज कि हमारा जो फर्स्ट वर्जन था प्रोडक्ट का दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज हम थोड़े लेट हो गए हैं मार्केट में. उसके बाद व्हाट हैपेंड कोइंसिडेंटली वाज टू स्टार्टअप्स रीच्ड आउट सेइंग कि यार यू गाइस राइट कंटेंट वेल, सो व्हाई डोंट यू हेल्प अस विद आवर कंटेंट. तो हमने वो भी स्टार्ट किया कि यार हम बूटस्ट्रैप्ड है, थोड़े कैश फ्लो तो आते रहेंगे. So we were doing content for startups, and I thought कि यार इसी को parallelly continue कर सकते हैं. I had started Jackfruit alone, but then a friend of mine joined in this duration कि यार चल मैं भी I'll also work with you, let's do it together. I've also quit my job and so we then started building out newer products. कि what is it that the audience wants now? हम तो mutual funds पे educate कर रहे थे, वो तो सबको पता है. So then we started looking at other products. हम unlisted shares देख रहे थे. We were doing alternate assets. But by the time we got the partnerships in place and everything, our runway was kind of over. मतलब जो भी पैसे आ रहे थे, so हमने फिर वो content का काम कम कर दिया because then we were focusing here. So the runway got over, and then my co-founder had to step down. So he has a 1-year-old kid, and he had financial commitment there. And पैसे आ नहीं रहे थे. So then he had to step down. And then I thought, this will again be like a reset for me. Because again, going back and then starting it again, and मेरा भी personal runway, was kind of getting over. So I thought, rather than, just sticking to it, just because, just to try कि यार आगे करे. What had happened was, if we would have given it another 2 months, probably हमको मिल जाते थे 500,000 users और who would have actually bought the products. But we were selling a product जिसका liquidity low है. So if you want to sell that product, it's difficult to sell it. And then हमने सोचा कि यार 2 महीने में हम बेच तो देंगे, एक validation तो आ जाएगा. But what if there is a chance that we have to shut after that? फिर हमारा
फिर हमारे यूजर्स कहाँ जाएंगे? I actually appreciate you and your thoughts in saying कि अगर आगे पीछे कुछ गड़बड़ होता तो फिर तुम्हारे कस्टमर कहाँ जाते, because I'm not quite sure, and tell me honestly कितने लोग actually ऐसा सोचते होंगे कि हाँ यार मेरे कस्टमर्स का फिर क्या होगा. In fact, the other thing which I see is for some फाउंडर्स और मोस्ट फाउंडर्स इज एक वो ईगो आ जाती है कि यार अब तो इसको चलाते ही रहना पड़ेगा क्योंकि फिर फैमिली क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा. सो वैसा सब कुछ लगा नहीं तुम्हें कि कैसे? यार लग, नहीं लगा था, मतलब दैट वाज आल्सो देयर ऑब्वियसली कि यार लोग, मतलब व्हाट विल पीपल थिंक, बट इतना पता था कि यार 1.5 साल में काफी कुछ सीखा है स्टार्टअप जब बनाया तब, तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसे करियर तो खराब नहीं होगा उसकी वजह से, या तो इम्प्रूव ही होगा या तो सेम रहेगा, मतलब वो खराब तो नहीं होगा उसकी वजह से. सो दैट वाज एट द बैक ऑफ माई माइंड ऑलवेज देयर कि ठीक है यार, मतलब कुछ भी कर ले, आई एम नॉट गोइंग टू गो वन स्टेप बैक एटलीस्ट. एंड होपफुली नॉट हैपन. अभी भी मैं वो सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक कुछ अभी करियर आगे का प्लान सेट है, बट होपफुली दैट विल नॉट हैपन. या And I remember when I तुमसे, I think while we were messaging only, I'd asked you what about your team members, right? या फिर कंपनी में और जो लोग थे. So I think somehow तुमने बताया कि most of them have figured out, have got a job or an offer. So do you feel like revealing your plans to us कि what are you thinking, या फिर it's okay if you don't want to answer? नहीं, इट्स नॉट लाइक आई डोंट वांट टू आंसर, मुझे खुद ही नहीं पता है ऑनेस्टली. आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग. मैंने मतलब एक ट्रैजेक्टरी सेट किया था कि यार चलो बंद कर रहा हूँ, आई लुक फॉर अ जॉब, फिनटेक में ही रहना है, बस उतना पता है मेरे को कि यार फिनटेक में ही रहना है, स्टार्टअप्स में ही काम करना है प्रेफरेबली, अनलेस देयर इज अ गुड प्रोफाइल एट अ लार्जर कंपनी, मे बी वापस ट्राई करके देख सकते हैं. बट फिनटेक इज व्हाट एक्साइट्स मी, तो आइदर फिनटेक या बैंकिंग हो गया, दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. तो थॉट यही था कि आगे जाके मतलब बस शर्ट करके जॉब ढूंढेंगे, लेकिन अब देयर आर अ कपल ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज आल्सो दैट हैव कम अप. कुछ मटेरियलाइज नहीं हुआ है, बट वी आर स्टिल, आई एम स्टिल. really wish you well and I wish you luck. And अगर वो 15-20 days से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो don't be so hard on yourself, because and I appreciate कि despite everything that has worked out in your favor or not, you still have some positivity left in you. Because I mean seriously, मैं आज पहली बार थोड़ा सा डरी हुई थी कि पता नहीं कैसे क्या होने वाला है, कैसी चीजें रहेंगी. बट right from the moment we connected कि इसको रिकॉर्ड करना है, I never felt for once कि you're sorry for yourself या फिर ऐसा कुछ भी. I think that is the biggest thing, right? And that is the biggest learning. And not just you but even I wanted the world to understand कि founders का journey इतना भी hunky dory या easy नहीं होता है, and how they can again bounce back, right? मतलब ठीक है, nothing is the end of the world, because अभी का अगर टाइम देखें एम्प्लॉइज के लिए भी डिफिकल्ट है, राइट, विद द ले ऑफ्स गोइंग ऑन. एंड आई कैन ओनली अंडरस्टैंड उनकी भी सिचुएशन वैसी ही होगी, राइट? इट डजेंट मैटर तुम फाउंडर हो या एम्प्लॉय हो, हर किसी का स्ट्रगल तो वही होता है. तो जिस तरीके से तुम बता रहे हो कि ठीक है एम्प्लॉय वाला ऑप्शन, इसका ऑप्शन या चीजें फिगर आउट कर रहे हो, आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर पीपल टू लिसन एंड लर्न कि हाँ अपने करियर में भी तो पिवट कर सकते हैं. हाँ, मतलब इट्स आई डोंट नो वेदर इट्स अ गुड और बैड थिंग, बट आज अगर मैं कहीं किसी के साथ जॉब का डिस्कशन करता हूँ, तो दे आस्क मी व्हाट रोल यू लुकिंग फॉर, मैं बता देता हूँ यार मैंने A B C ये 3 चीजें की है, आई एम ओके विथ ईदर ऑफ देम. तो यू नो contrary to that, when I have friends working in corporates or wherever, they have दे वर्क इन वन फंक्शन की प्रोडक्ट मैनेजमेंट ही किया है, लास्ट 7-8 साल से, किसी ने सेल्स ही किया है 7-8 साल से. सो आई डोंट नो वेदर इट्स गुड और बैड, बट मेरा वो एक कांस्टेंट नहीं रहा है. सो आई हैव डन 2 थिंग्स एसेंशियली, मतलब आई हैव ऑलवेज बीन ऑन द बिजनेस फ्रंट, एंड अभी लास्ट स्टार्टअप के टाइम पे कंटेंट साइड पे भी काफी काम किया है. सो इसेंशियली ये 2 चीजें की है, एंड फ्रॉम हियर आई एम ओके टू टेक एनी पाथ फॉरवर्ड. just trying to wrap this beautiful conversation, is there anything which you feel कि मैंने नहीं पूछा, या you want to share your piece of advice to humans who are listening to you?
Yeah, I think entrepreneurship as a career path अगर चूज करना है तो बहुत सोच समझ के चूज करना चाहिए. I mean, you have to weigh the pros and cons. I was fortunately lucky that I chose it at a time जहाँ पे मेरे इतने financial responsibilities नहीं थे. But my co-founder, on the other hand, he had financial responsibilities and he took the risk, which is great, but nahi chala. So, it's not. बहुत लोग बोलते हैं यार अपना if you have that passion वो हो जाएगा. It's not just about passion. There is a lot more. And especially if you come from a middle class family, somebody like me, जहाँ पे वो financial cushion नहीं है. You can't give 5 years and say कि ठीक है यार मैं 5 साल नहीं कमाऊंगा चलेगा. It's okay. End of the day, भले ही financial responsibilities इतनी ज्यादा नहीं है बट कुछ तो है. So Right. it's not like you're born with a silver spoon. So if you're not that, then you have to. I don't want to scare anybody, but you have to take a very calculated risk. कि यार ठीक है, I am keeping X amount of money for the next X years. जहाँ पे even if I'm not earning anything, this amount of money should be sufficient for my expenses. उतना एक calculation के एक personal runway रखना चाहिए. And it's tough. मतलब if I had known इतना tough होगा, I probably wouldn't have started up. So एक वे में अच्छा है कि I didn't know. मैंने कर लिया. बट अगर मुझे पता होता इतना डिफिकल्ट है मैं नहीं करता. अब नेक्स्ट टाइम कर लूंगा बिकॉज आई नो हाउ टू डील विद इट. बट फॉर द फर्स्ट टाइम it's very tough. So it's मतलब you have to kind of be prepared that it's not easy. It takes a toll on your time. It takes a toll on your health, mental health, physical health, everything. कुछ भी बोल लो वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहता है यार. So I don't want to. It may come across that I'm scaring people, but it's not as glorious as it sounds. It's very glorified. It's not that easy. But end of the day, if you choose to take that path, it's you're going to enjoy it, and you're going to at the end of the day, even if it doesn't work out, your career, like I said, will either stay there or progress. वो पीछे नहीं जाएगा, and most likely it will progress forward. So है मतलब there are challenges, but if you want to do it, if you've calculated and taken and you want to take those calculated risks, you should go ahead with it. I absolutely love this piece of advice because it's not just having passion in it, but it is also very practical and reality check wala, right? Because most of us come from middle class backgrounds and भले बहुत liabilities नहीं होंगी. अगर ठीक है तुम अपने माँ बाप को भी नहीं सपोर्ट करोगे बट तुम्हारे तो कुछ खर्चे होंगे, तुम्हें तो कुछ खाना पीना सर्वाइव करना है. So it totally makes sense. And again, thank you so much, Ankur, for being on my podcast. This is my slightest and little way of giving a tribute to you and entrepreneurship, but I genuinely wanted to do something for you, and I hope I was able to do so. No, thanks a lot for me, yaar. It was really nice being here, and I'm sure uh, your podcast is going to help a lot of people who want to kind of tread on this path. So it's really great that you did this. Thank